Good afternoon, all dear student. Today I am going to teach you lesson number 19. Lesson name is Life Cycle of Stars. So, students, there are some questions. What is galaxy? What are the different constituent of our solar system? What are the major difference between star and planet? What are satellite? Which is the star nearest to the sun? तो इसके आंसर आपको राइट डाउन करने हैं. दिस इज़ अवर टुडेज होमवर्क. ओके, तो अभी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. वी हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इन अर्लियर स्टैंडर्ड. तो पहले यूनिवर्स का स्ट्रक्चर हमने अर्लियर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है. अवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन गैलेक्सी. हमें पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी के बीच में है. ठीक है, तो बहुत ऐसी बड़ी गैलेक्सी होती है. गैलेक्सी में सोलर सिस्टम होता है. सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट होते हैं. प्लैनेट में हमारा अर्थ है. हमारे अर्थ में हम हैं इतने से छोटे से. तो देखो, a galaxy is collections of billions of stars, their planetary system and interstellar cloud which are present in empty space between stars. तो ये एम्प्टी स्टार के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें ये सब क्या है, सिचुएटेड है. द यूनिवर्स इज मेड ऑफ इनुमरेबल सच एज गैलेक्सीज. तो बहुत सारे ऐसे गैलेक्सी है. हम जो गैलेक्सी में रहते हैं उनको हम मिल्की वे बोलते हैं. ठीक है, हमारे गैलेक्सी का जो नाम है वो क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है. ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी है. तो देख लो, सोचो कि हम कहाँ हैं. देखो, गैलेक्सी इतनी बड़ी है. गैलेक्सी में हमारा एक छोटू सा सोलर सिस्टम है. उस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है. अर्थ में हम छोटे से एनिमल हैं. तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं. तो देखो, a galaxy is a collection of billions of stars. Their planetary systems are interstellar cloud which are present in the empty space between stars. The universe is made up of innumerable such galaxies, and galaxies differ in structure and shape. We can divide them into three types. तो हम गैलेक्सी को थ्री टाइप में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट है स्पिरल, सेकेंड है इलिप्टिकल एंड थर्ड है इरेगुलर गैलेक्सीज. तो हर एक गैलेक्सी के शेप्स कैसे होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं. अवर गैलेक्सी इज अ स्पिरल गैलेक्सी. हमारा जो गैलेक्सी है वो कैसा है, स्पिरल. आप जैसे भौरे को घुमाते तो मतलब ऐसा साइक्लोन कैसे आता है, उस टाइप में स्पिरल. तो हमारा जो गैलेक्सी है वो कैसा है, स्पिरल गैलेक्सी है. आर मेड ऑफ मिल्की वे एंड मंदाकिनी. तो हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, नहीं तो उसको मंदाकिनी भी कहा जाता है. और स्पिरल गैलेक्सी इज शो इन फिगर. तो फिगर में भी स्पिरल गैलेक्सी दिया है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. हाउ डिड वी ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स. कैसे हमें मिल सकते हैं. तो देखो, इफ़ वी लुक एट द स्काई एट नाइट वी सी ओनली प्लैनेट एंड स्टार. तो हमें सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार ही दिखाई देंगे. Then how did we get information about the other component of universe? The answer of this question is telescope. तो बहुत बड़े बड़े ऐसे टेलीस्कोप होते हैं जिसका यूज़ करके हम इस प्लैनेट का, गैलेक्सी का क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. तो सेवरल टेलीस्कोप आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो देखो, जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है जो मैंने सुना है कि पूना में है. पूना में सबसे बड़ा जो एक टेलीस्कोप है उधर ही वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है उस प्लेस का नाम. एक विलेज जैसा ही है वो. उधर सबसे बड़ा टेलीस्कोप है. सेवरल टेलीस्कोप आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ while some other are kept about man-made satellite which are orbiting the earth in fixed orbit. कुछ जो टेलीस्कोप है वो सैटेलाइट में फिक्स किए हैं ताकि वो जो सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमेगा तब हमें उसके इमेज मिल सकेंगे, नहीं तो हम उसको देख सकेंगे. ठीक है, तो which are obtaining the earth in fixed orbit. As these telescopes are situated above the earth atmosphere, they can observe astronomical objects more effectively.
Astronomers study the observation made by this telescope to obtain detailed information about the universe. We are going to learn about all these higher standards here. Let us learn about the properties of stars and their cycles. तो हमें अब आज का स्टडी करना है स्टार्स के बारे में और साइकिल के बारे में. तो देखो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स. तो स्टार्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं. एट नाइट वी कैन सी अबाउट 4,000 स्टार्स विथ अवर नेक्ड आइज. ठीक है, हम आँखों से बहुत सारे स्टार देख सकेंगे. सन इज़ एन ऑर्डिनरी स्टार अमंग देम. सन कैसा है, एक ऑर्डिनरी स्टार है उनके बीच में. द रीज़न टू कॉल सन एन ऑर्डिनरी स्टार is that even through it appear to be the larger than all other stars in sky because of this being nearest to us. तो हमें सबसे बड़ा स्टार कौन सा दिखाई देगा, सन, क्योंकि वो अर्थ के नियरेस्ट है, इसलिए हमें जो सबसे बड़ा स्टार दिखाई देने वाला है वो है सन. ठीक है, तो देखो there are billions of stars which have higher or lower mass, size and temperature than those of the sun. Stars are gigantic sphere of hot gas. gigantic मतलब बहुत ही बड़ा ऐसा स्पीयर होता है हॉट गैसेस का. Some properties of sun are given in the table below. तो एक टेबल दिया है बुक में पेज नंबर 129 पे. तो उधर जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब गैस के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो सन में जो गैसेस प्रेजेंट है उसके प्रॉपर्टीज़ भी दिए हैं. हाइड्रोजन मेकर्स फॉर 72% ऑफ द मास ऑफ द सन while helium is 26 and rest 2% made up of elements heavier than helium. तो सबसे बड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है, 72% हाइड्रोजन होता है, हीलियम 27% होता है, 26, और जो रेस्ट गैसेस होते हैं वो 2% होते हैं. इससे क्या होता है, ये सब मास से क्या बनेगा, अर्थ की जो हीट है वो हीट प्रोड्यूस होने वाली है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ सन में मास आ जाएगा 2 × 10⁻13 kg. रेडियस दिया है, सरफेस टेम्परेचर भी दिया है एंड टेम्परेचर एट सेंटर. तो देखो कितना ज़बरदस्त इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है. 58,000 kg का, नॉट kg बट के मतलब उसका 58,000 को आप 100,000 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई करो सॉरी, तो उतना टेम्परेचर उसका सरफेस का होता है. एज है 4.5 × 10⁻9 ईयर्स, इतना एज है सन का. तो देखो अभी the mass of the sun is about 3.3 lakh times that of the earth and its radius is 100 times that the earth. Other stars have masses between 1/10. So m means mass of suns upon 10, that of the suns, and 100 times that of the sun is 100 m sun, and the radius can between 1/10 to 1000 times radius of the sun. तो देखो, डू यू नो स्टूडेंट्स, द masses of the other stars are measured with respect of the mass of the sun, and this means that mass of sun written in m, कैपिटल M लिखना है, उसके नीचे सन लिखना है, इज़ यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ मास. ये यूनिट यूज़ किया जाता है. तो देखो डायग्राम ऑब्जर्व करो, कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ द डिफरेंट स्टार. अलग अलग साइज़ दिया है अलग अलग स्टार का. तो वाइट डॉर्फ, सन, सुपर जायंट स्टार और रेड जायंट स्टार. तो ये सब स्टार दिए हैं. सबसे छोटा स्टार तो सन दिख रहा है, सुपर जायंट तो कितना बड़ा है, रेड जायंट स्टार भी बहुत ही बड़ा है, जो वाइट डॉर्फ होता है वो छोटा होता है. ठीक है, तो द एज ऑफ द सन एंड द अदर स्टार विच इज़ द टाइम इलैप्स आफ्टर देयर फॉर्मेशन can be between a few millions year to the few billions year if the
if the properties of sun has changed in its lifetime, it would have caused change in the property of the earth and its life on the earth. Detailed studies of the properties of earth have led scientists to conclude that the property of the sun have remains unchanged over its lifetime, that is the past 4.5 billion year. According to the studies made by astronomers, this property will slowly change in further after 4.5 billion year. अभी बर्थ ऑफ स्टार का बर्थ कैसे हुआ ये मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बताती हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो पहले ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टार क्या है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके। Hey Bubbles, have you ever wondered why some stars are brighter than others? Why are these stars of different colors? Also, how far exactly are they from the Earth? And imagine we have a spaceship that travels at the speed of light. How long would it take us to reach the nearest star? Good questions. But let's start with the simplest question. What is a star? A star is a huge ball of burning gases which emits energy in the form of heat and light. Our sun is a star. These huge balls of dust and gas come in different colors and brightness levels. They are also located at different distances from the Earth. Let's first discuss the colors of stars. The color of a star depends on its size and temperature. Stars emit heat and light in different amounts. The coolest and the smallest stars appear red. The hottest and the most massive stars appear blue. The stars in between these two extremes are orange, yellow, and white in color. Our sun is a yellow star. What is its size and temperature? Pause the video and discuss. The sun is a medium-sized star with a temperature between two extremes. Now let's discuss brightness. Look at these street lamps. The lamp further away appears dimmer than the one closer to us, even though they both emit the same amount of light. It's the same with stars. Imagine two stars that emit the same amount of energy. One is near the Earth and the other is further away. Which one will look brighter? The one closer to the Earth. Excellent! Now imagine looking at two stars that are the same distance from the Earth. The star which emits more energy will appear brighter. Thus, the brightness of a star depends on the distance of the star from the Earth and the amount of energy it emits. Let's answer Spikey's last question. How far are these stars from the Earth? To put it simply, stars are very, very far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the Earth. Distances between stars are so great that kilometers are no longer useful as units. Instead, astronomers use light years to measure distances in the universe. A light year is a measure of distance that light covers in 1 year at the speed of 300,000 kilometers per second. To get a sense of how huge this is, 1 light year is equal to 9.5 trillion kilometers. The moon is just 1 light second away from the Earth. This means that the light of the moon takes 1 second to reach the Earth. The sun, our closest star, is 8 light minutes away from the Earth. The next closest star, Proxima Centauri, is 4.2 light years away from us. Now, Spikey, if you had a spaceship that traveled at the speed of light
How long would it take you to reach Proxima Centauri? 4.2 years, because Proxima Centauri is 4.2 light years away. Twinkle, twinkle, little star. Now I know exactly what you are. Yay! Let's summarize. A star is a huge ball of burning gases which emits energy in the form of heat and light. The color of a star depends on its size and temperature. The brightness of a star depends on its distance from the Earth and the amount of energy it emits. Star distances are measured in light years. A light year is the distance that light covers in 1 year at the speed of 300,000 kilometers per second. This was our today's lecture, students. I hope you understood each and everything. Thank you. Bye bye.